नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कॉर्पोरेट रडार में, जहां पर हम रोज बरोज बातचीत करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से, जानते हैं कंपनी के इन आउट के बारे में और समझते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से वो विस्तार करेंगे, किस तरह से कंपनी अपने सेक्टर में एक बड़ा नाम या फिर बड़ा मार्केट शेयर ओन करने वाली है। इन सब पर हम बातचीत करेंगे। आज की मैनेजमेंट में हमारे साथ मौजूद होगी, लेकिन उससे पहले आज बाजार देख लेते हैं कि मार्केट्स में कई दिनों के बाद रादर एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। सेंसेक्स करीब 3-4% नीचे कामकाज कर रहा है। निफ्टी भी रफली ½ नीचे कामकाज करते हुए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स हालांकि अभी भी हरे निशान में है, यानी कि बाजार की जो ओवरऑल ब्रेथ है मार्केट में वो अभी भी तेजी के साथ ही है। इंडेक्स में गिरावट है, एफएमसीजी उसे लीड कर रहा है, आईटीसी मेन कल्प्रिट है जिसकी वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन सपोर्ट है बैंकिंग से, आईटी से, फार्मा से। ये तीनों ही इंडेक्स सपोर्ट करते हुए आईटी 1% ऊपर है, फार्मा में करीब 3-4% की बढ़त देखने को मिल रही है। मेटल, एफएमसीजी इनफैक्ट 6.5% नीचे, इसमें आईटीसी सबसे ज़्यादा दबाव दिखाते हुए। इसके अलावा रियल्टी और तेल गैस शेयर, ये कुछ और ऐसे शेयर हैं जहाँ पर दबाव आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ सेक्टर हैं जो कि आज मार्केट में प्रेशर दिखा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की मैनेजमेंट के साथ। कंपनी है ग्रुप फाइनेंस और हमारे साथ मिस्टर सुधीन चौकसी मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आपने कंपनी को उस हालात में संभाला था जिस समय रियल एस्टेट के अंदर एक भारी दबाव देखने को मिला था, एक बड़ा क्रैश आया था। वहां से आपने इस कंपनी के अंदर फेरबदल किया और एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर के साथ आज आप होल्ड करते हैं। अभी का सिनेरियो और तब के सिनेरियो में कितना अंतर आ चुका है और आज के सिनेरियो में कंपनी कितनी वेल पोजिशन आपको दिख रही है? During that period of the 1995-96 crash, the real estate market was not, very well organized. Whereas, as of today, there are many players. The real estate developers have been very well organized. Now we also have a RERA, the act which has come into the play, which will also further, regulate the developers. So I think the real estate industry has certainly gone through significant changes, and I think the coming period is going to be good for the customers as well as for the institutional lenders like Group and the bankers. Okay. मिस्टर चेक्सी, क्योंकि आपने इस सेक्टर को पूरी तरह से डेवलप होते हुए देखा है और अब बड़े बड़े फेरबदल आए हैं, जिसके अंदर रेरा भी है, जीएसटी भी है। जो डिमांड है वो थोड़ी स्लम्प साइड पर है अभी, क्योंकि रिटेल जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा एक्टिवली पिकअप नहीं कर पा रही है। आप प्राइस ट्रेंड कैसा देख रहे हैं और डिमांड के अंदर जो एक अपटिक्स आए हैं, आपको लगता है क्या ये रिवाइवल की साइड पे जा रहे हैं, यहाँ से पिकअप करेगा और इम्प्रूवमेंट होगा? कैसा प्राइस ट्रेंड देख रहे हैं आप गोइंग फॉरवर्ड रियल एस्टेट स्पेस में? I think real estate sector, I think if you see over a period of last 20 years, 30 years, there is generally a cycle of, around 5 to 7 years. When we will see that, over a period of 5 to 7 years, the demand gradually picks up, property prices also go up, and then, the slump also starts coming in. And at a current juncture, we are going through a difficult or a stressful period for the real estate sector. This is a 4th year or a 5th year in a succession where the demand has been weak. The property prices had picked up almost, to an unaffordable level around at 2012, 2013. And I think the prices have started softening, mainly because of the excess inventory and the stock which has been lying around. So I think going forward, the prices will soften a little further, and the interest rate scenario also has been, much favorable for the customer. So I think the demand will gradually pick up over the next 2 to 3 years period of time. Okay. मिस्टर चौकसी की एक नया सेगमेंट जो पिकअप हुआ है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग का। ज़्यादातर सभी कंपनियां अब अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर उतर चुकी हैं, वहाँ से अच्छी डिमांड भी आ रही है और ये सेगमेंट ना केवल लग्जरी प्रॉपर्टी जो बनाते थे वो भी अब अफोर्डेबल के अंदर आ चुके हैं। तो ये सेक्टर की तरफ आपका क्या व्यू है? कैसा लगता है आपको ये सेक्टर, और क्या इसी में ही अब नेक्स्ट जो ग्रोथ का लैग है वो इसी में आता हुआ दिखाई पड़ेगा? I think you are absolutely right. If you look at the government statistics of the shortage of the housing, it is largely in the low income group
and economically weaker section. Almost 90% of the shortage today is at a low end of the market, and therefore any supply which will come into this segment, I think, which will definitely show a good business opportunity for the developers and the customers who have not been getting their own house under this segment. They will be able to get it. So I see that the future growth, at least for the next 5 to 10 years, would emerge mainly from the low end of the market, because the top end of the market is already saturated. People have been buying the second home or a third home, or they have been investors who are investing into that. So I think the demand will come at a lower of the MIG segment or the low income segment. That is where the demand will come. ओके सर, अब कंपनी की अगर बिजनेस पे बात करें तो कंपनी मेजरली रेवेन्यू जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र से कमाती है। सबसे ज़्यादा कंपनी के लिए रेवेन्यू वहीं से आता है। थोड़ा सा प्रेशर तमिलनाडु और चेन्नई मार्केट्स में ज़रूर देखने को मिला है, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस हैं, प्राइसेस को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं। आप क्या इन्हीं मार्केट्स में, यानी ट्रेडिशनल मार्केट्स जो हैं उन्हीं में एक्सपैंड करेंगे, या जो टियर 2 मार्केट्स आपके लिए हैं आप उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वहाँ पर अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं आने वाले समय में? देखो, ग्रू का हिस्टोरिकली वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात, सो ऑब्वियसली गुजरात हैज बीन contributing a significant amount of the volume of business. But over a period of time, we have moved from Gujarat to Maharashtra, and from Maharashtra to Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka, Tamil Nadu, and now we have gone to Uttar Pradesh also. So as such, we are present in the 10 states. If I look at the current quarter, where we have done the expansion over a period of time, the major contribution during the quarter has come from, more from the other states than from the Gujarat. So I see that, our presence in the newer states, our penetration into the tier 2, tier 3 towns of the newer states, I think they will start contributing, and going forward, we will have a good contribution from there. Okay. सर, इस क्वार्टर के अंदर पर्टिकुलरली स्लाइटली एनपीएस जो है वो बढ़कर आए हैं। दो ये एनपीएस का जो फिगर है बहुत ही नेग्लिजिबल है, और लास्ट 2 क्वार्टर में कंपनी के पास कोई भी नेट एनपीए नहीं थे। लेकिन ये क्या वन ऑफ मान के चलें, क्योंकि जिस तरह के ट्रेंड पे कंपनी काम कर रही है, आमतौर पे कंपनी के एनपीएस नहीं होते हैं। तो क्या कुछ जो एनपीएस इस बार ही बढ़कर आए हैं, ये कोई वन ऑफ फिगर है, या ऐसा कुछ छोटा मोटा फिगर आगे भी देखने को मिल सकता है? No, I think, you should look at it. We always had a gross NPAs, but क्या होता था कि we used to provide for the full provisions, and therefore we will continue to build up, the NPA coverage. हमारे gross NPAs, almost at the level of around 0.5% रहे हैं. So this time also they have been slightly higher. If you compare the previous year figure of a gross NPA, which was around 0.52, which has gone up to 0.64. Then the provisioning coverage also, which was almost around 50%, which we have increased it to 70%. So by the end of the year, we will have a complete provision coverage as we move forward. But NPA to रहते ही है, but all along our NPAs have remained less than 1%, or at the most they have gone not beyond 0.7. So this is not one of the situation. This is a cyclical situation. Okay. Every first quarter, second quarter, we see the level of NPA slightly goes up from our traditional level of around 0.27 to 0.3. So I don't see anything alarming or anything exceptional situation for this particular quarter. Okay, सर, एनआईएम्स फ्रंट पे हमेशा जो एनआईएम्स की ट्रेंड रहा है पिछले अगर 4 क्वार्टर के देखें तो उनमें लगातार नंबर्स में इंप्रूवमेंट है, और 4.3% के आसपास के एनआईएम, जो कि एक अच्छे एनआईएम के तौर पे देखा जा रहा है। क्या प्रोबेबल रीजन होंगे सर इसके, इस तरह के जो एनआईएम्स मेंटेन कर रही है कंपनी? NIM, generally we try to work on a spread, and we maintain that spread irrespective of the movement of the interest rates, because when the interest rates go up, we obviously charge a high rate of interest from our customer. When interest rates go down, we also pass on the interest rate benefit or reduction to our customers, and we have tried to maintain a steady spread over a period of time, and that helps us maintain a steady NIM ratio over last so many years. We have been able to maintain NIM ratio in excess of 4%. जी, आपने सर ब्याज दरों की बात की, क्योंकि इस बार ये संभावनाएं भी लगाई जा रही है कि जिस तरह के महंगाई के आंकड़े आए हैं और ग्रोथ के नंबर्स हैं,
उनको आधार मानते हुए शायद महंगाई के अंदर, शायद ब्याज दरों के अंदर कमी करे आरबीआई, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। आपका व्यू क्या कहता है, पर्टिकुलरली आपके सेक्टर को लेकर कितनी संभावनाएं हैं और कितनी जरूरत है सेक्टर को भी ब्याज दरों में कटौती को लेकर? I think, as you rightly said, inflation has certainly come down. The latest figure, shows of the inflation at a very, very low level, probably one of the lowest in the country we have seen over the last so many years. And therefore, there is a very good case for the interest rate to further come down. And I'm sure, I think in the next policy, RBI will definitely look at it very favorably to review the interest rates, and they may give a signal by reducing the repo rate. So I think interest rates will soften going forward. Economic also needs to grow faster. The investments are required. And even in the real estate sector, where the government wants to push for housing for all, I think more resources needs to come, more investment in terms of the real estate sector needs to come, and I think the interest rates comes down. I think it will be good and healthy for the sector. Okay. कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पर्टिकुलरली कंपनी की अगर बात करें तो उसमें एक रिडक्शन देखने को मिला सर। इनफैक्ट पिछले 4 क्वार्टर से लगातार गिर रही है, अभी भी 7.6% के आसपास कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आ चुकी है। अच्छे से जो एनआईएम्स को और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को आप मेंटेन कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न है सर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 7.6% लाने का, या फिर गोइंग फॉरवर्ड क्या ये इसी ट्रेजेक्ट्री में रहेगी, या लगता है थोड़ा और ईज आउट हो सकता है यहाँ पर? See, as I told you, the interest rates, in the economy will keep moving up and down, depending what is the demand for the money. Besides, the policy rates, because the supply and demand or the liquidity also determines, what is going to be the interest rates generally prevalent in the economy. Now, over a period of time, in the last few quarters, we have seen the interest rates have been declining. RBI also has reduced the rates over the last 2-year period, and we also have experienced similarly the reduction in the lower rate of interest. We have also passed on that rate of reduction in the cost to our customers also. So even their yield on the borrowings also have come down. So I think this scenario of 7.7% weighted average cost of fund which is there, which is going to be very dynamic. If the interest rates further go down, obviously we will endeavor to reduce that rate of our borrowing cost. So I think we'll look at the option from where we can get a lower cost of funds, and we will keep churning our borrowing profile and try to maintain lower weighted average cost. Okay. सर, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर जो कंपटीशन है वो काफ़ी इंटेंसिफाई हुआ है, बहुत सारे नए प्लेयर्स भी आए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जिस तरह का कंपटीशन है, आप अभी भी एक अच्छे मार्जिन को मेंटेन कर पा रहे हैं, 4% के ऊपर के मार्जिन आपने कहा कि मेंटेन कर पा रहे हैं। ये कितना और चैलेंजिंग रहेगा गोइंग फॉरवर्ड इस तरह के मार्जिन को ही मेंटेन रखना? I think it is going to be challenging. The competition is going to increase. The competition has also increased from the banks because the credit offtake at the bank level is on a decline. The credit offtake, as you know, has come down to the level of 5% over the one of the probably lowest in the history of the country, and therefore they are also very aggressive on the retail front. Housing business or mortgage loans are considered to be very safe, and therefore there would be much more competition. The spreads will come under pressure, and I think it is going to be a challenge for every player to sustain a good spread and generate a reasonable amount of profit. जी सर, एक डिसबर्समेंट ग्रोथ को लेकर भी सवाल होगा। करीब 28% के आसपास की डिसबर्समेंट ग्रोथ देखने को मिली है Q1 के अंदर। क्या फैक्टर्स रहे थे इसके वजह, किसकी वजह से ये 28% के आसपास का आंकड़ा हमने देखा है, और आगे चल के एनआई की ग्रोथ आप कैसे देख रहे हैं? See, NI growth, as I told you, will all depend on, one is the spreads, how much spreads we will be able to maintain in the midst of the competition. So I think one of the factor for the NI growth would be as to what sort of a spread we can maintain in terms, despite the competition. So that is going to be the one factor. The second factor is, what we have experienced in this quarter is that government's thrust
for a housing for all, and the government policy, wherein they are giving a credit linked subsidy scheme, I think that has created a significant interest among the retail customers, and they all want to avail of this credit links interest subsidy scheme, where they are getting around on an average 2.5 lakh of rupees as a reduction as far as their interest liability are concerned. So I think that has created demand. We have seen a lot of interest in that, and I hope if this policy continues over a period of time as intended, probably there would be sustained growth over a period of time. Okay.